सारे जगत तुम्हारी आए तेरे दरबार जोई पार दे ओ खाली Mangeta Kureyapanete Soi Soi Deve Yo Mangeta Kureyapanete Soi Soi Deve Chaturadi Sakino Vale Apana Sirda Parakara Dario Chaturadi Sakino Vale Apana Sirda Parakara Dario Kirapakataka Avalokana Dasikadu Kavidario Kirapakataka Avalokana Dasikadu Kavidario Jo Mangeta Kureyapanete Soi Soi Deve Jo Mangeta
Itegiyo Akaji Itegiyo Arite Pame Itegiyo Agi Apagi Mage Sajake Ave tue utelake Ati apani bage sajake Ave tue utelake Ahisi chala chala sanu mariave Nahisi chala chala sanu mariave Itegiyo Tataji Itegiyo Marita Mare Itegiyo Tataji Buddha Mare Ijate Anu ele tukede mukande Ataje hunda ngale chitande Anu ele tukede utande Jechire no nasira ke valiame Jesire no nasira regalame Itegiyo Tataji Itegiyo Arite Mave Itegiyo Dole Jaketa Veda Pane Lave Ore Hune Keda Dole Jaketa Veda Pane Lave Ore Hune Keda Eva Jokone Vachame Eva Jokone Vachame Uche Malihave Itegiyo Namaji Itegiyo Arite Mahame Itegiyo Maria de Achade Diavi Ake Lukia da de Mitavi Sunem Maria de Achade Diavi Ake Lukia da de Ona que danza Ona que danza Bebida Maria Itegiyo Tataji Itegiyo Arite Mame Itegiyo
Everybody, please switch off your mobiles or put them on silent. स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी में लिखा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जैसे संतों ने सुमरन की महिमा गाई है, गुरु का ध्यान भी उतना ही जरूरी है। Guru Sahib in his Bani has said that we should contemplate on the form of our master within when we are doing our meditation. Just as it is important to do our repetition or simran, it is equally important to contemplate on the form of the master at the eye center. जो भी महात्मा हमें नाम दिए हैं, हमें उन्हीं के स्वरूप को ध्यान में बिठाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि महाराज हमेशा कहते थे कि गुरु कभी मरता नहीं, उनकी आत्मा अमर होती है, शरीर किसी का भी कायम नहीं है, ये मिट्टी का बर्तन है, समय संदर्भ इसको यहीं फेंक के जाना पड़ता है, लेकिन आत्मा अमर है। Sanji used to say that the master never dies. So we should contemplate on the form of the master who has initiated us. So Sanji used to say that the master never dies because this body which is to be left behind, that is only an earthen vessel that is given for a few days. And this earthen vessel has to be then cast aside and a new form has to be taken. The masters, they are immortal and they are always there with you. And you should contemplate on the form of the master who has given you initiation. कहते हैं संतों का बड़ा तपस्या होता है, शरीर छोड़ने के बाद में भी वो सतलोक सचखंड नहीं जाते हैं, ब्रह्म में ही अपनी बैठक बनाते हैं और वहां से अपने सिखों की संभाल रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया का कनेक्शन ब्रह्म से है और इसीलिए ब्रह्म में बैठ के वहां से सब शिष्यों की रक्षा करते हैं। The masters, they do a very great sacrifice. After they leave the body, they do not go back to Sachkhand Satlok, but they instead stay at the level of the Brahm. That is where all the souls are connected. And from there, they take care of all of their disciples. So until all of their disciples are free, they continue to reside in the Brahm. और ब्रह्म में बैठ के सत्पुरुष का ध्यान में मग्न रहते हैं, उनका दर्शन पर्शन करते रहते हैं, लेकिन जब तक एक सिख भी दुनिया में मृतलोक में है, तो संत ब्रह्म से आगे नहीं जाते हैं और ब्रह्म से ही सब शिष्यों की रक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे महाराज चोला छोड़ गए। So they sit in the Brahm and there they are contemplating on God Almighty, and they are also taking care of all their disciples until the very last disciple leaves this world. The masters stay there and they forever protect all the disciples. हम कहते हैं कि जब पूरा शिष्य मृतलोक से सतलोक भेजने के बाद में फिर आप भी जाके सतलोक उस परमात्मा में समाते हैं, और फिर क्योंकि जो सतलोक सचखंड है वो अमर देश है, मरने के बाद एक बार आत्मा जाती है, मरने के बाद तो लौट के नहीं आ सकती, इसीलिए संत नहीं जाते, वो ब्रह्म में बैठक बना के वहां से ही अपने शिष्यों की रक्षा करते रहते हैं।
इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए महाराज नहीं है, वो हमेशा हम आपके साथ है। So we should therefore never think that our masters have left us and they are no longer with us. The masters, they sit in the Brahm and they contemplate uh, on God Almighty from there. Sachkhand is a immortal place, and it is a place of immortality. So as soon after death, if the soul goes into Sachkhand, then the soul merges with God Almighty there and doesn't come back. So the masters therefore sacrifice uh, that pleasure and continue to stay in Brahm only for their disciples. And only after the last disciple is taken to Sachkhand, the masters go back to Sachkhand. कहते हैं जो भी संत हमें नाम दिए हैं, हमारा लेखा जोखा उन्हीं के हाथों में है, हमें उन्हीं का ध्यान करना जरूरी है। So the masters who have initiated us, our account of karmas is in their hands, and we should therefore contemplate on the form of the masters who have initiated us. तो इसीलिए हमें उन्हीं का ध्यान बराबर करना चाहिए। हम दूसरे संत महात्मा के पास जाते हैं, वहाँ जरूर फायदा मिल जाता है कि हमारे कुछ उनके दर्शन से कर्म करते हैं, हमारी भक्ति ताजा होती है, लेकिन हमारा लेखा जोखा जिन्होंने हमें नाम दिया उन्हीं के पास है। Therefore, we should contemplate on the masters who have initiated us. We can always go to the living masters and we can always get the benefit of their darshan, of their prasad, and we can refresh our love and affection towards our master. We can refresh our devotion there by going in the presence of a different living master. But within, we should be contemplating on the form of the master who has initiated us, because our account of karmas is with him. तो कहते हैं इसीलिए अजय सिंह महाराज ने कहा था, जो कहता है कि गुरु मर गया उसको कोर्ट में खड़ा कर दो, क्योंकि मर जाने वाला गुरु क्यों किया। Therefore, Sanji used to say that for those who say that my master is dead, you should make that disciple stand in a court and you should question him that why did you even make a master who dies? कहते नहीं, संत कभी मरते नहीं, वो भक्ति करके परमात्मा से मिले होते हैं, उनकी आत्मा अमर होती है, ये शरीर किसी का भी कायम नहीं। So we should never be in that belief that the masters are dead and they have left us. The masters are immortal, they are connected with God Almighty, and they are immortal like God Almighty. It is only this body that has to be left behind. तो ध्यान भी उतना ही जरूरी है। अगर ध्यान नहीं आता है, काफी दिन हो गए महाराज दूर होके, अगर ध्यान नहीं आता है तो कोई चिंता मत करो, सुमरन के पीछे पड़ो। सुमरन से मन और चित्त जैसे निर्मल होएगा, गुरु अंदर बैठा है शब्द रूप में, वो जरूर सामने आ जाएगा। So we should not get disheartened if we are not able to clearly contemplate on the form of the master who has initiated us. We should continue to then focus on our Simran, because by doing the Simran we will be able to cleanse our mind, and once the mind becomes cleaner, the master is not far away, he is in the form of the Shabad within, and he is in the form of the sound current, so he will immediately come in our contemplation. It is only about cleansing our mind. तो जैसे जैसे सुमरन से मन निर्मल होएगा, क्योंकि सुमरन बड़ी ऊंची चीज है, क्योंकि हम जड़ शरीर में हैं, जड़ को काटने के लिए जड़ की जरूरत होती है। इसीलिए संत पांच नाम का सुमरन बताते हैं, जो हमें नौ दरवाजे से खाली करके 10वें तक लेके आता है। सुमरन कोई छोटी मोटी चीज नहीं, तो सुमरन ज्यादा से ज्यादा करना, जिससे मन और चित्त निर्मल होंगे। गुरु जब से नामदान देता है, शब्द रूप में अंदर बैठा होता है, वो जरूर सामने प्रकट होगा। The Simran given to us by our masters is of a very high order, and we should constantly do our Simran. If the masters give us Simran, because in order to
get out of the bondage of the physical world, we have to have something which is given in the physical form. And hence, the Simran of the 5 words is given to us, so that by constantly repeating the 5 holy names given by the masters, we are able to get out, we are able to get our attention of the soul focused out of this physical body, clear our 9 doors, and come to the 10th door. So we should not undermine the importance and the order of Simran. It is a very important thing that the masters have given to us. It is for us to get out of this body. तो इसीलिए जो है कि हमें गुरु से प्रेम प्यार बनाए रखना चाहिए, विश्वास पूरा रखना चाहिए और भजन सुमरन में ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। तो इसी सुमरन और ध्यान भी जरूरी है, लेकिन ध्यान करने के समय हम ख्याल रखें कि गुरु का स्वरूप आता नहीं करके फोटो सामने रख के उसका स्वरूप का ध्यान करना संत मत में निषेध है। So therefore, it is very important for us to contemplate on the form of the master while we do our meditation and do our Simran. And we should do our Simran all the time, so that we are able to cleanse and get focus in our mind and in our faculty of contemplation. By doing so, we will be able to contemplate on the form of the master in a better way. तो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा सुमरन भजन बढ़ेगा, मन की सफाई होगी, गुरु जरूर सामने आके बैठेगा, वो अंदर है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास और भरोसा से भजन सुमरन में जुड़ना चाहिए। And when we do so, the master is not far away. He is within us, and he will definitely grace us with his contemplation and with by coming in contemplation. So we should not get disheartened that we are not able to get a clear picture of our master or contemplate. We should be steadfast in our Simran and steadfast in our contemplation of the master. सवेरे का समय है, वातावरण शांत है, हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है और शांत मन ही भजन के लायक होता है। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन और भजन से जुड़े। This morning time is very good for meditation because the mind is quiet, and a quiet mind is good for meditation. So let us make the most of it. Let us close our eyes and get connected to our Simran and Dhyan.